Namaskar, good evening. I'm Dr. Devkumar Rengaraja, ENT skull-based surgeon from Fortis Hiranandani Hospital, Vashi, Navi Mumbai से. So आज हम बात करेंगे skull-based osteomyelitis. This is one of the dreaded disease in ENT. करीब 15 से 20 बरस पहले this used to be one of the most dreaded disease जिसमें कई deaths होते थे post this disease. Luckily for us, fortunately we have lot of good antibiotics that has come, and इस बीमारी की समझ भी बेहतर हो गई है, because of which आज हम लोग इस infection को treat कर पा रहे हैं and we can cure the patient completely of this disease. Now let's understand कि skull based osteomyelitis होती क्या है. तो skull based माने इंटरफेस बोन जो ब्रेन और कान या नाक को डिवाइड करे. So this is the basically जैसे हम हिंदी में बोले तो खोपड़ी का भाग, which is like the roof of the nose या roof of the ear, तो हमारी ब्रेन के जस्ट नीचे रहती है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है बिकॉज ये क्लोज टू द ब्रेन होती है एंड यहाँ से काफी सारे नसें बाहर निकल आती है जो मेनली कान में से 7वां नंबर नस जो चेहरे को सप्लाई करता है, 9, 10, 11 जो निगलने में या बोलने में मदद करती है एंड 12th नर्व जो टंग को सप्लाई करती है. तो काफी सारे इंपॉर्टेंट नसें होते हैं एंड दैट इज व्हाई दिस डिजीज बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट वन एंड हाईली मॉर्बिड एंड मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है. वेल ये बीमारी होती क्या है एंड किस में होती है. वेल दिस इज वन ऑफ द डिजीज जो एल्डरली पब्लिक जो यूजुअली हु आर मोर देन 60-65 ईयर्स ओल्ड जो होते हैं उनमें होता देखा जाता है एंड स्पेशली जिनमें डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो. Usually इनकी sugars होती है around like 350, 400, 450. These are the kind of numbers जो मैं बोल रहा हूँ. Usually around diabetes के sugar level should be around 180s. People who are on medications या insulin या something of that sort should be less than 200. But ये जो uncontrolled जो होता है, जो या तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या तो दवाई रेगुलरली ले रहे हैं या डायबिटीज का भी पता ही नहीं चला. यूजुअली द शुगर शुड अबाउट 450, 300. And the other thing, the three cardinal signs or the three cardinal symptoms जो होते हैं, एक होता है कि uncontrolled diabetes and कान से discharge आना, जैसे पस निकलना या पानी जैसे आना. And the third most important is deep pain. So the 3 Ds rather, diabetes, discharge and deep pain. So the pain is excruciating and the pain इतना काफी ज्यादा होता है कि नॉर्मल पेन किलर वगैरह से it does not subside. The pain is almost unbearable. जिधर कान के ऊपर की भाग हो या जॉ के भाग हो या गर्दन गले तक पेन होती है and it is continuous constant pain. So these are the 3 things which one should notice first. And the most important thing in this disease is कि हम अगर इस बीमारी को जल्द पकड़े, the earlier we diagnose, the better the outcome, the better the treatment. So the most important request from doctors is to, अगर आप uncontrolled diabetic हो and if you are experiencing excruciating pain in the ear, please see an ENT and skull base surgeon and get yourself checked and evaluated. The most important thing is to have your sugars under control and proper diabetic control रखना, diabetes के tablets लेना, keeping your diet under control is most important. Now let's see what happens in this disease. अगर if not taken care of at the earlier days, जो usually 15-20 years back, you know, when antibiotics were not there, तब क्या होता था कि ये बीमारी जैसे जैसे फैलती थी, it has the propensity कि वो फैले. पहले इसके नाम होते थे मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये सब कई नाम दिए गए, बट यूनिफॉर्मली सिनोनिमसली दीज डेज इज बीन नोन एज स्कल बेस ऑस्टियोमाइलिटिस. सो बेसिकली ऑस्टियोमाइलिटिस बोले तो जो बोन है वो बोन इरोड होना शुरू हो जाता बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. नाउ वंस इट स्टार्ट्स गेटिंग इरोडेड तो वहां के जो नसें होते हैं इट कैन गेट अफेक्टेड. लाइक फॉर एग्जांपल अगर 7वां नंबर नस गया तो फेस का पैरालिसिस हो सकता है, मुंह टेढ़ा होना एंड आंख बंद नहीं होना, ऑल दिस थिंग्स.
जब 9 10th 11th if the disease goes up to jugular foramen, एक foramen होती है जहां से तीन नस निकल आती है, 9 10 11, and अगर ये नस पकड़ जाए तो इंसान की बोलने की क्षमता, जो आवाज है वो चेंज हो जाता है, ठसका लगता है जब खाना निगलते हैं या पानी पीते हैं, या आवाज में बदलाव होना, निगलने में तकलीफ होना, ऑल दिस थिंग्स बिगिन टू हैपन। एंड इफ 11th ना अफेक्ट हो तो ये शोल्डर जो है वो उठने में दिक्कत होती है, ये ऊपर नहीं जाती है ये शोल्डर। एंड if the disease get even more advanced, patient can land up with meningitis also at times, जब brain के infection तक पहुंचे। So it has, that's how the mortality to this disease was high. Now, once you go to a doctor, we'll run a lot of battery of test. Actually, it's a team effort in which बहुत बार in diseases में elderly population में there will be many other disease also, जैसे kidney के problems हो गए, cardiac problems हो गए. So we take care of everything, and there's a team effort where सारे battery of tests होते हैं जिधर sugar control किया जाता है. We get to know कि किस लेवल का इन्फेक्शन है, कितना सीवियर है, we start them on some medications, and meanwhile हम स्कैन्स वगैरह कराते हैं। तो स्कैन्स वगैरह करते वी कम टू नो दैट द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, जो बोलते हैं कि बीमारी कितनी फैली हुई है, किस स्टेज में है, वेदर इट इज एन अर्ली डिजीज, वेदर मॉडरेटली आगे पहुंचा हुआ है या काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड कि एग्जैक्टली किस स्टेज पे है बीमारी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई दिस डिजीज, and that is where the role of patient and the relatives play. If you feel that so and so person is having an uncontrolled diabetes, who's very careless with the sugar levels and is having a deep boring pain in the ear or in the skull, please do meet a surgeon who is trained in skull based surgery, so that the appropriate effective medications are started at the earliest, and हम infection को control करें, and we save the life of the patient. Now, most important is to understand that any infection, the treatment is antibiotics. So कई बार ऐसे होता है कि such complicated diseases can be treated with simple antibiotics, plain tablets and injections, if identified at the earliest possible. So the most important I've been stressing on again and again is to identify the disease at the earliest. So with antibiotics, good antibiotics and effective antibiotics, we can arrest the disease, we can cure the disease completely. कई बार ऐसे होता है कि या तो दवाई काम नहीं करती, या तो देर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स विद द पेशेंट, लाइक नेफ्रोलॉजिकल प्रॉब्लम या कार्डियक प्रॉब्लम्स, की सर्टन दवाई उतने पावरफुल दवाई नहीं दे पाते। तो इन दैट सिचुएशन वी लैंड अप operating on this patient surgically. We operate, and we try and control as much as possible to remove the disease from all around the nerves near the skull base, and we start them on effective medications. कई बार ऐसे देखा गया है कि not just bacterial infections, there have been fungal infections also which land up with skull base osteomyelitis, and appropriate treatment देना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। So important thing is to identify the disease, to land up with the right doctor, and to start the treatment at the earliest possible. अगर अर्ली ढूंढ ले तो विद इन बट फ्यू कपल ऑफ मेडिकेशंस एंड फ्यू टैबलेट्स एंड injections, patient comes back to completely normal, and controlling the sugars aggressively is the key factor. Post that, patient does really well. We've been treating skull base osteomyelitis since quite some time now, and काफी सारे patients we've been diagnosing it early, they are doing very well. And the advanced diseases, we do surgeries, extensive surgeries rather, काफी बड़े surgeries होते हैं, and we do them, and they do get completely better off post surgery. But the key is, अगर हम पहले ही पकड़ लें तो we avoid surgery, and we can save the life of the patient and lesser the morbidity to the patient. So all my request would be, if someone who's an elderly person with uncontrolled diabetes, please take care of your sugars, meet your doctors at the right time, and try not to get any ear infections. And if at all you develop
कि कान में दर्द हो रहा है या कोई इन्फेक्शन, please do meet ENT and skull base surgeons nearby and get the right treatment at the earliest. Thank you.